Our top story, the Bombay High Court today was the scene of a rather interesting debate on personal liberties. It started with a rather unusual plea by three Jain trusts that want a ban on advertising of meat and meat products. Their logic is that meat ads are disturbing and intimidating. They're also saying in their petition that these ads tamper with the minds of the young people in their community to become non-vegetarians. The petition made everyone from the central government to the state of Maharashtra to the Advertising Standards Council of India to private meat companies owning brands like Licious respondents. It further wanted the court to ensure that meat companies print warnings on their packaging saying consumption of non-vegetarian food is harmful to health and environment, much like cigarette packs do. Now, the court gave them a very patient hearing today and then asked them to withdraw their petition asking, why are you infringing on the rights of others? The court cited Article 19 of the Constitution that guarantees freedom of speech and expression. Now, interestingly, the Bombay High Court has asked the Jain trusts to come back to them with a fresh plea with better particulars, they say. Was this petition really necessary or was it frivolous? Let me put that question to our guests who are joining us this evening. We have Abhishek Sudhir, who is an advocate, spokesperson of the Tiranga Shakha. He is calling us from Lucknow. We have Acharya Lokesh Muni, who is a Jain guru. We have Dilip Cherian, who is joining us on the broadcast. He is the founder of Perfect Relations. And we have Advocate Pankaj Jain, who is a senior advocate. आचार्य लोकेश मुनि जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी. नमस्कार. मुझे ये समझाइए कि इस पेटिशन की जरूरत क्या थी. बहुत लोग कहेंगे कि ये तो बिल्कुल फ्रिवलस सी पेटिशन है. इस देश में 70% लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि मीट खाते हैं. जैन कम्युनिटी एक बहुत छोटी कम्युनिटी है. उनको मीट से प्रॉब्लम है, वो ना खाएं. उनको मीट के एडवर्टाइजिंग से प्रॉब्लम है तो वो ना देखें. लेकिन बाकी लोगों की राइट्स पे वो क्यों इंक्रोच करना चाह रहे हैं? नहीं, ये जो खाने की बात है, मैं कहता हूं जब हमारे यहाँ पर टीवी में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का विज्ञापन नहीं दिखाया जाता है, जब हमारे यहाँ पर शराब का विज्ञापन नहीं दिखाया जाता है, ठीक उसी तरह से मांसाहार धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, दूसरों को उसके लिए प्रेरित करता है. जबकि मूलतः मांसाहार जो है प्रकृति के अनुकूल नहीं है. मनुष्य की शारीरिक संरचना, मांसाहारी और शाकाहारी की शारीरिक संरचना, उसके दांतों की, उसके हाथों की, उसके पंजों की अलग होती है और प्रकृति की दृष्टि से मनुष्य मांसाहारी प्राणी नहीं है. दूसरे में हमारे जैन शास्त्रों के ही अंदर ही नहीं, उसके साथ साथ महाभारत के अंदर भी जगह जगह मांसाहार का निषेध किया गया है, क्योंकि ये तामसिक आहार की कोटि में आता है जो कि हमारे भीतर हिंसक प्रवृत्ति को पैदा करता है. और मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जब सिगरेट, तंबाकू और शराब का विज्ञापन नहीं दिखाया जाता है तो मांस का विज्ञापन दिखा करके क्यों उत्तेजित किया जाता है. दूसरे में हमारे पर्यावरण को यह नुकसान पहुंचाता है. 1 किलो मांस को उत्पन्न करने में कितना अनाज की खपत होती है, कितना पानी का अपव्यय होता है. और कोरोना की मार ने इतना बड़ा सबक दिया कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें, फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं. ये हर दृष्टि से जो है ये बिल्कुल प्रतिकूल है. ये इस तरह से विज्ञापन दिखा करके उसको प्रति उत्तेजित करना जो है ये बिल्कुल उचित नहीं है. धार्मिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से और हमारे ग्रंथों की दृष्टि से, धार्मिक ग्रंथों की दृष्टि से ये कह देना कि 70% खाते हैं, ये कोई बात नहीं है. हाँ जी, बताइए. लेकिन मुनि जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप जिन धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमको तो ये पता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो नॉन वेजिटेरियन थे. जैन लोग जो हैं वो वेजिटेरियन हैं, ये मैं समझती हूँ. उनके ग्रंथ बोलते हैं कि आप वेजिटेरियन रहिए, नॉन वेजिटेरियन मत रहिए. वो मैं वही तो कह रही हूँ. अगर जैन लोग मानते हैं, लेकिन पेटिशन तो तीन जैन ट्रस्ट ने की है ना. और इस देश में सिर्फ जैन तो रहते नहीं है मुनि जी. वो देश के हित में की है. इस देश में मुसलमान भी रहते हैं, इस देश में सिख भी रहते हैं. व्यक्ति होता है तो उन्हें कौन मनाही करता है? उन्हें कौन मनाही करता है? मैं कहता हूं लोग पीने वाले शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, लेकिन उसके विज्ञापन का निषेध है. ठीक उसी तरह से ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है
हमारी नई पीढ़ी को उस तरह गलत रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। और ये केवल जैनों तक मामला नहीं है, हिंदुस्तान की बहुसंख्यक जनता शाकाहार में विश्वास करती है। धार्मिक प्रवृत्ति की हमारे यहाँ पर हिंदू परंपरा है, जितनी सनातन परंपरा है, उन सब के अंदर मांस का निषेध है। इसको आप केवल जैनों से मत जोड़िए। पेटिशन लगाने वाला एक व्यक्ति होता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन पूरी सनातन परंपरा, पूरी हिंदू परंपरा जो है मांसाहार का निषेध करती है। इसको केवल जैनों से जोड़ करके इसे तोड़िए मरोड़िए मत। नहीं, मैं क्या तोड़ूंगी मरोड़ूंगी, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेटिस्टिक्स हैं जो हमको बता रहे हैं कि इस देश में जो हिंदू हैं, ज्यादातर हिंदू मीट खाते हैं। तो आप जो ये धर्म आहत होने की बात कह रहे हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने की बात कह रहे हैं, तो मीट आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है, लेकिन मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करता। मैं तो हिंदू हूँ और भगवान को भी मानती हूँ। तो कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है खाने? कौन किसको मना कर रहा है खाने के लिए? मैं फिर कह रहा हूँ, सिगरेट का तंबाकू विज्ञापन का निषेध है, शराब के विज्ञापन का निषेध है, भले है, उसी तरह से इसका विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कहना कि इतने प्रतिशत हिंदू खाते हैं, ये हिंदुओं के प्रति अन्याय है। न जाने कहां से आंकड़े उठा करके लेकर के आ जाते हैं। न केवल नई हिंदू नहीं खाते हैं, मैं निषेध करता हूं, न सनातन खाता है, न जैन खाता है, और सारे सिख भी नहीं खाते। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो है, गुरु नानक जी की वाणी, गुरुदेव जी की वाणी जो है, उसके अंदर भी इसका कोई प्रोत्साहन नहीं है, उसका निषेध है। तो इस तरह से किसी के ऊपर ये कह देना, हाँ व्यक्ति विशेष कोई ऐसा कोई करता होगा, लेकिन इसके विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गुमराह करने वाला विज्ञापन है। हम ये जो आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ ना, पीढ़ी को गलत रास्ते ले जाने वाला विज्ञापन है। ठीक, मैं समझ गई। सबसे पहले आप कह रहे हैं मुझसे कि मैं अभिषेक को लेके आऊंगी। मैं जमीनी धरातल की बात बता रहा हूँ, मैं आपको जमीनी धरातल की बात बता रहा हूँ। अभी आपने सिख समाज की बात कही, गुरु नानक देव जी ने मनाही की है, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर मनाही है, जैन आगमों में मनाही है, हमारे वेदों में मनाही है, उपनिषद में मनाही है, महाभारत में मनाही है। फिर नहीं, शिव भगवान तो हमारे खाते थे, ये तो हमको पता है ना, बचपन से हमने सुनी है कथाएं। अरे मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, शराब पीने वाले, मैं कह रहा हूँ शराब पीने वाले पीते हैं, सिगरेट पीने वाले पीते हैं, उसका विज्ञापन नहीं दिखाया जाता, निषेध। समझ गई। दिलीप चेरियन, ठीक है, चलिए। ये तामसिक प्रवृत्ति वाला है, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। आज कितना कैंसर बढ़ रहा है, आप अमेरिका जैसे देश में देखिए, हर तीसरा आदमी कैंसर से पीड़ित हो रहा है। मांसाहार कितनी बीमारियों को उत्पन्न करता है, जो और उनके पशुओं पक्षियों का भी तो अधिकार है जीने का। आए तुले पयासु, उनको मारने का हक किसने दिया है? हम ये प्रकृति के साथ 92% of this world is non-vegetarian, it's non-vegetarian food, ठीक है। और इसीलिए कोरोना जैसी महामारियां आती है। अरे मुनि जी, आप ऐसी बातें बोलेंगे तो पहले ही आप ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसका विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। खैर, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जरा अब रुकिए और दूसरों की भी बात सुन लेते हैं, क्योंकि इस पैनल में 3 और लोग हैं। अभिषेक, वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस डिबेट? व्हाट मुनि जी हियर इज एसेंशियली सेइंग इज दैट लुक, this is offending me. Advertising of meat is offensive to Jain sensibilities. It is misleading our young people. And we are not asking people not to consume. All we are saying is, just like there is a ban on advertising of cigarettes, of BDs and of alcohol, let's stop advertising meat and meat products as well. Where do you stand on this? Yeah. Well, Shreya, that is really the crux of the issue. Can you equate tobacco and alcohol with the consumption of meat? I think it's beyond any debate now that tobacco is injurious, cigarettes are injurious to health. As far as alcohol is concerned, consumed in exceedingly high amounts can be injurious to health. But I really don't think you can make the same argument as far as meat is concerned. I think I'd like to applaud the restraint shown by the Bombay High Court. The Bombay High Court made 2 very important observations. First, they said, we don't want to interfere, we don't want to entertain this petition. And secondly, they said, even if we wanted to entertain this petition, we don't have the power to actually ban the advertising of meat products. Why did they say that? Simply put, it is in the domain of the legislature, it is the assembly in Maharashtra, or its parliament even, that has to take the call on it and see if they want to ban meat products being advertised.
Where do I stand on it? Obviously, I think this is an asinine and ridiculous petition. You cannot ban. Why would you ban the? Why would you ban it? I mean, there is no rationale. There is no public policy reason behind the banning of meat. If you're going to ban something because it hurts somebody's sentiments, we probably will have to stop breathing because my breathing is probably offensive to somebody somewhere, right? So you can't start banning everything simply because it's offensive to a community. Is a ban on the advertising of meat products constitutionally permissible? It's constitutionally permissible only if it can be proved beyond any doubt that, like tobacco, the consumption of meat is harmful to health, and the petitioners, that's what the court meant when they said, please come back to us with better particulars. I don't think they can come back with statistics that show that the meat products are actually as harmful as tobacco products, and even if they can, this is a matter for the legislature. All the major political parties of Maharashtra have opposed this meat ban, and a statistic, 85% of Bombay consumes mutton or fish. So this ban on meat products is advertising. It's also a violation of Article 19, Shreya, if I can just say that. Article 19 of the Constitution says that every citizen has the right to carry on a trade, occupation, or business. Any interference with that trade, occupation, or business has to be supported by a public policy rationale. If it is not, then it is a violation of both Article 19 and Article 14, which prohibits discrimination between citizens. But here's the thing, Abhishek. The fact is, maybe the Jain Trust got their idea from the fact that before any Hindu religious festival, whether it is Ganesh Chaturthi or Janmashtami or Ram Navami or Sawan or, whatever it is, municipalities around this country go on banning meat for 4 days, 5 days, 7 days. Even for a Jain festival, right ahead of that Jain festival, there is a meat ban. So maybe that is where the idea is coming from. Yes. So see, that is a sort of, I think you can say that's a public order issue, wherein the local administration takes a call that, hey, maybe we should, order a meat ban for those few days. I don't necessarily have a problem with that, but that's a highly localized decision. But at the central level, if you're going to have the Bombay High Court pass strictures and say you can't advertise any meat products, that's too much of an overreach, basically. It's too much of an overreach. Let me get in Mr. Jain on this story as well. Dilip, I'll just come to you. I just want to hear everyone else first. Advocate Pankaj Jain, please help me understand. How is it fair to compare tobacco or alcohol to meat? The logic that was given in court is that we are not asking for a ban on meat or meat products. All we are saying is that ban its advertising. And on packaging, say that meat and meat products are injurious to health and environment. Please help me understand, where is the data, where are the studies that tell us that consuming meat is harmful for our health? 92% of this planet consumes meat. More than 70% people in this country consume meat. When you say things like ban its advertising, you are actually infringing on the rights of others. I'm not saying this. The Bombay High Court has said this. Look, in my opinion, it is true that there is a consumption of meat taking place all around the world, but there is an approach towards reducing this meat consumption. It is scientifically proved that red meat, eating red meat, etc., does affect the cholesterol level of the human being. It is affecting the obesity. And in that context, if you look at, there are scientific reasons which can be brought on record, which says, and so we may have to move to a regime where these kind of things may have to be banned in future. This is from the scientific perspective I'm talking about. Now, from the legal perspective, see, like you have right to, there is under Article 21, it provides for right to life. Now, this also includes the right to protect the tradition of the person, his culture, their heritage, which gives a meaning to the man's life. Now, like, okay, there has been debate, yes, this is only pertaining to Jains, but yes, there are a lot of Hindus who also practice vegetarianism. And in the Western countries also now, there is a move towards vegan, which also talks about vegetarianism, a kind of vegetarianism. So in that context, in my opinion, that there is a growing demand, and in that context, even in Indian context, you have said for there various is no growing religious... demand. Where is the growing demand, Mr. Jain? The Growing only demand
I've heard is from from the Jain community and this PIL, and talking about what all scientific papers say. Scientific papers will also tell you that drinking of milk is harmful to your health. Now, don't give milk to your children. There is no. Yes, there is. Given the sort of injections, hormone injections that our cows are given. Yes. And the sort of quality of milk that is being produced. So I'm saying a wrong way of breeding a cow. And you're saying everyone has a right to protect their culture. Only Jains have culture in this country. Muslims don't have culture. Jains? The other Hindus don't have cultures. Pahadi Hindus don't have their culture. We consume non-vegetarian food, sir. And I'm as much as a Hindu as a Jain is. Mr. Cherian, would you want to come in here? Is this a ridiculous PIL that was filed in court? Or do you think there is some logic to it, some reason to it? I think it's fairly easy to conclude that it is totally ridiculous. But the point is somewhat different. If you want to try and create a ban, give me scientific evidence and proof. Today, actually, there is growing evidence that even the so-called vegetarian substitutes which are being created as protein for those who are non-consumers of meat are actually far more harmful to the environment. And as you rightly pointed out, there is growing evidence that given that no mammal who is above 6 months of age drinks milk of any kind, there is growing evidence that today a lot of the problems that children are having is a result of the consumption of milk. But that doesn't mean that you ban advertising for milk. People who are following the scientific trends can take their decision. The marketers of milk can carry on. So if you start banning things, for example, every car causes pollution. It is well established. So do you want to ban advertising of cars? Cars kill more people than almost any other disease. Do you want to ban cars because that is what the approach is? The answer is no. So as advertisers, as people who look at the way the markets function, the arguments don't make any sense. Besides the whole issue of Article 12, Article 14, all of that, but the fact is that we are dealing with people who are, to many extent, this kind of thinking is what I call micro-fringe thinking that wants to insert itself into the mainstream and then vitiate the debate, making it a quasi-religious debate. And I think that is where it's wrong. मैं I'll give the last word to Muni ji. Muni ji बहुत लंबी चौड़ी में ये डिबेट नहीं करना चाहती और मैं लड़ाई झगड़े वाली डिबेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहती और इसमें हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं लाना चाहती. बट आप आप लेकिन जो आप कल्चरल मुनि जी लेकिन जो कल्चरल वैल्यूज की बात करते हैं ना, देखिए जेन्स की एक अपनी कल्चरल वैल्यू है, हम सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं. मेरी एक कल्चरल वैल्यू है, मैं पहाड़ों से आती हूँ, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं. हम उस कल्चरल वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हैं जहाँ से अभिषेक आते हैं, जहाँ से दिलीप चेरियन आते हैं. हम सब के मीट ईटिंग ट्रेडिशंस हैं. तो क्या सिर्फ आपका कल्चरल ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट है? हम लोगों का कल्चरल ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट नहीं है? मुसलमानों का कल्चरल ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट नहीं है? हमारे कल्चरल ट्रेडिशन में मीट खाना है, हमें एडवर्टाइजिंग देखनी है. और जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो लिशेस वगैरह के लोग, वो पाकिस्तानी थोड़ी ना है भाई, इंडियन कंपनीज हैं जो करती हैं. पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, आप इसको जैनों से मत जोड़ो. ये आईपीएल लगाने वाला व्यक्ति जैन है, इसका मतलब नहीं है कि केवल जैन कम्युनिटी, पूरी सनातन परंपरा, हिंदू परंपरा, मैं भी तो सनातन परंपरा की हूं. गुरु ग्रंथ साहब को पढ़िए. दिलीप चेरियन, आप मेरी बात सुनिए ना. आपने इतना लंबा प्रश्न किया तो मुझे उत्तर देने दीजिए, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, आप महाभारत पढ़िए, आप जैन आगमों, वो केवल जैन की बात नहीं है. दूसरे में मैं साइंटिफिक एविडेंस की बात करता हूं. आज मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसा हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है और उसी के साथ हम दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं. इसीलिए हमारे महान ऋषि मुनियों ने, शंकराचार्य ने, गुरु नानक देव जी ने, भगवान महावीर ने कहा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन.
अन्न केवल हमारे शरीर को नहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारी भावनाएं, हमारी आत्मा, इन सबको प्रभावित करता है। तो मुनि जी, मांसाहार तामसिक आहार की कोटि में आता है। तो मुनि जी फिर आप एडवर्टाइजिंग के लिए क्यों बैन मांग रहे हैं? किसने मनाई की? अरे समझिए, आप एडवर्टाइजिंग के लिए मुनि जी क्यों बैन मांग रहे हैं? फिर तो आपको बोलना चाहिए इस देश में मीट ही बैन हो जाना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि मीट खाना इतना, हाँ, बहन इसलिए मांग रहा हूँ, बहन इसलिए मांग रहा हूँ, बहन इसलिए मांग रहा हूँ कि हमारे भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा, उसके मन और बुद्धि, इंद्रिय, तो फिर आप मीट बैन नुकसान पहुंचाएगा। तो तब आप मीट बैन की मांग कर रही है, एडवर्टाइजिंग की मांग क्यों कर रहे हैं? प्राणियों के, पशु पक्षियों के जीवन के अधिकार को नष्ट करेगा। आज आप सैकड़ों की संख्या में गोरे वीगन बनते जा रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मांसाहार के जो दुष्परिणाम है सामने आ रहे हैं। इसलिए साइंटिफिक एविडेंस भी है और इसको वो साइंटिफिक एविडेंस सबसे, हमारी मुनि जी, सनातन परंपरा, हिंदू सनातन नहीं, हिंदू परंपरा में वेजिटेरियन होना कहीं नहीं है। नहीं, आप महाभारत बोलते रहिए, मुझे ये पता है कि हिंदू सनातन परंपरा में कहीं भी वेजिटेरियन होने की बात नहीं है। मैं भी हिंदू हूं और अभिषेक भी हिंदू है और हम वेजिटेरियन नहीं है। हमारा जो रिलीजन है हमको अलाउ करता है कि हम मीट खाएं। और अगर आपको मीट से इतनी समस्या है तो आप एडवर्टाइजिंग पे बैन क्यों मांग रहे हैं? आप सीधे मीट पे बैन मांगिए ना। और ये जितनी साइंटिफिक स्टडीज की आप बात कर रहे हैं, आज तो एक भी साइंटिफिक स्टडी कोर्ट में दाखिल नहीं की गई। अगर केस आपको जेन्युइनली आपको केस लड़ना है बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो कम से कम अच्छा एविडेंस दीजिए, अच्छी दलील करिए। एक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं थी PIL में जो कहती है कि नॉन वेजिटेरियन खाना सेहत के लिए खराब है। आगे की तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। चलिए तब तो फिर इसकी तैयारी करेंगे और पूरी तब तो मुलाकात फिर दोबारा होगी। ले जाएंगे मुनि जी, तब तो दोबारा होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मिस्टर चेरियन, अभिषेक एंड मिस्टर जैन। अगर ऐसा हुआ तो लाखों करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचेगा, उनके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचेगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। That was your opinion, but of course opinion will remain divided on a subject like this. Thank you very much for joining us, gentlemen. We are shifting our focus to the